वजीर आजम इमरान खान आज लिल्लाह ता जेलम रोड का संग बुनियाद रखेंगे। 126 किलोमीटर तवील दोरोया शाहरा पर लागत का तखमीना 16 अरब रुपए है, जो 30 माह की मुद्दत में मुकम्मल होगी। सड़क की तामीर से चकवाल, खुशाब, मंडी, भावुद्दीन, मीरपुर के इलाकों के दरमियान करीबी राबता कायम होगा। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास कल होगा। हुकूमती इत्तेहादी जमातों का वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इत्तेहादी जमातों के इजलास में मुस्लिम लीग काफ, GDA, MQM पाकिस्तान, बलोचिस्तान अवामी पार्टी की शिरकत। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ और दोपहर 12 बजे के खबरनामे के साथ मैं हूँ हुमा मलिक और मैं हूँ शाहिद नसीम। नाज़रीन, और खेल की खबरें लिए मैं हूँगा आपके साथ समी इकबाल, और स्टूडियो में आज हमारे साथ मौजूद होंगे एक साइकिल सवार ल्यू ग्रेनफुल शॉ। ये साइकिल सवार नहीं है, लेकिन ये एक मिशन है जिस पर ये काम कर रहे हैं, और इनका जो सफ़र है वो 30,000 किलोमीटर का है, और ब्रिस्टल से बीजिंग तक का ये सफ़र है जो ये निकले हुए हैं जिस पे, और 3 हफ्ते से पाकिस्तान में मौजूद हैं। अभी इन्होंने आगे लाहौर भी जाना है, इसके बारे में हम आपको मज़ीद भी डिटेल्स बताएंगे। अभी हम वापस लिए चलते हैं आपको मेन डेस्क की जानिब। बहुत शुक्रिया समी। नाज़रीन, खबरनामे का बाकायदा आगाज़ करते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज लिल्लाह ता जेहलम रोड का संग बुनियाद रखेंगे। 126 किलोमीटर तवील दो रोया शाहरा पर लागत का तखमीना 16 अरब रुपए है, जो 30 माह की मुद्दत में मुकम्मल होगी। सड़क की तामीर से चकवाल, खुशाब, मंडी बहाउद्दीन, मीरपुर के इलाकों के दरमियान करीबी राब्ता कायम होगा। आज लिल्लाह जेलम दोरोया सड़क का संग बुनियाद रखा जा रहा है। 128 किलोमीटर पर मुहित ये सड़क 16 अरब की लागत से 3 साल में मुकम्मल होगी। रिपोर्ट कर रहे हैं दानियाल आबिद। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशियात फवाद हुसैन चौधरी के हल्का NS-63 लिल्लाह ता जेलम सड़क के मंसूबे का संग बुनियाद रखने जा रहे हैं। इस मंसूबे पर 16 अरब रुपए लागत आएगी। 128 किलोमीटर दोरैया सड़क 3 साल में मुकम्मल होगी। हल्का NS-63 के मकीनों का मुतालबा था ये सड़क पिंड खान से जेलम तक मुकम्मल खंडरात में तब्दील हो चुकी है। इलाका मकीनों को ज़िले हेडक्वार्टर जाने के लिए बहुत सी मुश्किलात दरपेश थीं। मिनटों का सफ़र घंटों में तय होता था। इस दोरैया सड़क की तकमील के बाद तरक्की व तामीर का एक नए सफ़र का आगाज़ होगा। इस मंसूबे की जिम्मेदारी FWO को सौंप दी गई है। इलाका मकीनों ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और वफाकी वज़ीर फवाद हुसैन चौधरी का शुक्रिया अदा किया है। लिल्लाह ता जेलम रोड जो है वो काफ़ी अरसा से टूट फूट का शिकार है। इसका रोड के लिए जो है चौधरी फवाद साहब ने जो फ़ंड मंजूर करवाए हैं, इंशाल्लाह उम्मीद है इस पर जल्दी काम शुरू हो जाएगा। रोज़ाना इधर हादसे हो जाते हैं। हम वफाकी वज़ीर चौधरी फवाद साहब का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने मंजूर करवाई हुई है, और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि ये जल्द अज जल्द तमीर करवाई जाएगी। देर के लिए जब तक आते हैं। नाज़रीन, आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि हुकूमती इत्तेहादी जमातों ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया है। इस्लामाबाद में वज़ीर-ए-आज़म की सदारत में होने वाले इजलास में इत्तेहादियों के एतराज़ात दूर किए गए। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास कल तलब करने का फैसला किया गया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन का कहना है कि नून लीग ने अदलिया के खिलाफ मुहिम शुरू कर रखी है। इलेक्शन कमीशन के बाहर वज़ीर ममलकत इत्तलात फ़ारूक हबीब के हमरा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर का कहना था कि नून लीग ने कल भी अदलिया पर हमला किया। एक ऐसे शख्स की तरफ से जाली बयान सामने लाया गया जो नून लीग के लीडरों का परवरदा है। हम लोग जो हैं वो जजेस का एहतराम करके, इदारों का एहतराम करके आगे चलने पे यकीन रखते हैं। नवाज़ शरीफ की या मरियम नवाज़ की कोई पेशी होती है, उससे पहले एक कोई साजिश जो है इस तरह की गढ़ी जाती है और ख़बर लगाई जाती है, कोई एफिडेविट आता है, किसी की वीडियो रिलीज़ होती है। ये एक मुकम्मल प्लान के तहत हमेशा हम देख रहे हैं कि ये मामला जो है वो आगे बढ़ रहा है। PMLN ने जिस तरह पहले फ़ौज के ख़िलाफ़ एक मुहिम शुरू की हुई थी, अब उन्होंने अदालतों के ख़िलाफ़ एक मुहिम शुरू की हुई। इससे पहले भी नून लीग ने जब बुलाया गया था सुप्रीम कोर्ट में, तो आपको मालूम है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला कर दिया था। कल जिस तरीके से एक जाली एफिडेविट और एक ऐसे शख्स की तरफ से जो कि नून लीग के रहनुमाओं का एक तो परवरदा है, और इसमें कोई शुबह ही नहीं है कि वो लंदन में नवाज शरीफ के ख़र्चे के ऊपर जो है वो रह रहे हैं। आज जो लिया है नोटिस अतर मिनल्ला साहब ने, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, वो बड़ा मुनासिब है, और आज हम देखते हैं कि इसकी कार्रवाई आगे कैसे बढ़ती है।
चौधरी फवाद हुसैन ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और इंतखाबी इस्लाहात PTI और इमरान खान का ज़ाती नहीं कौमी एजेंडा है। पार्लियामान का मुश्तरका इजलास कल तलब कर लिया गया है। कल हम ये बिल पास करवा रहे हैं। जब भी इलेक्शन होते हैं हम कहते हैं हमें इस्लाहात चाहिए। जब इस्लाहात की तरफ आप जा रहे हैं तो उस वक्त अपोजिशन शोर मचा रही है कि इस्लाहात नहीं होनी चाहिए। मैं अब भी अपोजिशन को ये कहता हूँ कि आज आप बैठे हमारे साथ, कल के इजलास में अपोजिशन इन तमाम तरामीम के ऊपर खुले दिल से गौर करे। ये बिल हम कल पास करवा रहे हैं। तमाम इत्तेहादियों ने इसमें जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब की क़यादत के ऊपर एतमाद का इजहार किया है। तमाम बड़ी इस्लाहात के लिए हम मिलजुल के चलने को तैयार हैं। चौधरी फवाद हुसैन ने कहा कि बहैसियत वज़ीर इत्तलात जो भी बात की हुकूमत और काबीना की पॉलिसी के तहत की। इनफरादी हैसियत से इलेक्शन कमीशन और इदारों का एहतराम करता हूँ। उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन इस मौक़िफ़ को मुस्बत अंदाज में लेगा। इससे पहले इलेक्शन कमीशन में वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात चौधरी फवाद हुसैन के हवाले से केस की समाअत 2 रुकनी बेंच ने की। वफाकी वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन इलेक्शन कमीशन में पेश हुए और मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कहा कि मैं कागजी कार्रवाई में नहीं पढ़ना चाहता। इस्तदा है नोटिस वापस लिया जाए, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने माजरत तहरीरी तौर पर जमा कराने की हिदायत की। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम और सहाफ़ी अंसार अब्बासी के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह की सरबराही में हुई। अदालत ने आइंदा समाअत पर तमाम फरीकों को ज़ाती हैसियत में तलब करते हुए समाअत 10 रोज़ के लिए मुलतवी कर दी है। आपको आगाह करते चलें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम और सहाफ़ी अंसार अब्बासी के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह की सरबराही में हुई। अदालत ने आइंदा समाअत पर तमाम फरीकों को ज़ाती हैसियत में तलब करते हुए समाअत 10 रोज़ तक के लिए मुलतवी कर दी है। नाज़रीन, इसी हवाले से मजीद बात कर लेते हैं। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे इमरान मनसब इस वक्त मौजूद हैं टेलीफोन लाइन पर। इमरान मनसब, बताइएगा इस अहम मामले के बारे में मजीद क्या पेशरफ्त हुई है? जी बिल्कुल, ये जो एफिडेविट का मामला था, इस पर आज कल चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने नोटिस लिया था और आज जंग ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकीर रहमान, डी न्यूज़ के एडिटर आमिर गौरी और डी न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी जो हैं वो अदालत में पेश हुए हैं। और जो दूसरे फरीक थे, जो साबिक जज गिलगित बल्तिस्तान के राना शमीम, वो आज अदालत में पेश नहीं हुए। उनकी तरफ से उनका बेटा पेश हुआ और उन्होंने कहा कि वो रात ही को गांव से पहुंचे हैं और इस वक्त उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो आइंदा समाअत पर वो पेश हो जाएंगे। इसके ऊपर चीफ जस्टिस ने फिर मीर शकील जो हैं उनको रोशन पर बुला लिया और उनसे कहा कि बहुत ही भारी दिल के साथ आज आपको तलब किया है। हमारी कोशिश है कि लोगों का जो एतमाद है वदिया पर बहाल हो और आज़ाद आईनी अदालत हो। हम जो है वो इज़हार आज़ादी राय के भी चाहते हैं कि वो हो, लेकिन सोशल मीडिया और न्यूज़पेपर में एक फ़र्क होता है कि अखबार की एक एडिटोरियल पॉलिसी और एक एडिटोरियल कंट्रोल होता है। और इस हाई कोर्ट के एक जज के बारे में बात की गई जो कि बिला खौफ खतर काम करती है। अगर मैं अपने जजेस के बारे में पुरएतमाद ना होता तो ये प्रोसीडिंग भी शुरू न करता। इस अदालत के जजेस जवाब दे हैं और उन्हें तनकीद का भी सामना करना पड़ता है। अगर आवाम का अदलिया पर एतमाद ना हो तो फिर माशरे में इंतशार पैदा होगा। और आपके अखबार की स्टोरी ने ये काम किया है। उनका ये भी कहना था कि मेरे खिलाफ सोशल मीडिया पर एक प्रोपेगेंडा मुहिम चलाई गई कि मेरा एक लंदन में फ्लैट है, अगर कोई इस हवाले से बयान हल्की जमा कराए तो क्या वो आप अपने अखबार के फ्रंट पेज पर छाप देंगे। इस पर उन्होंने ये भी कहा कि एक साबिक चीफ जज जो है वो उसने एक बयान हल्फी दिया है और वो भी फ्रंट पेज पर छाप दिया गया। आप एक काम आसान नहीं है। मैं पूछता हूँ कि आपने ये क्या किया। आप अपनी प्लीज हेडलाइन पढ़ें, जिस पर उन्होंने जब मीर शकील से कहा कि अपनी हेडलाइन पढ़कर सुनाए तो उसके जवाब में जो है वो अंसार अब्बासी ने हेडलाइन पढ़कर सुनाई और उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि क्या आपने ये जो हेडलाइन है इससे क्या तासुर मिलता है कि क्या हमारी हाई कोर्ट की अदालत किसी से हिदायत लेते हैं, क्या ये जो बयान हल्फी है क्या ये किसी जुडिशल रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं है। आपने इस बात की तहकीक की कि क्या बयान हल्फी जो था वो जो लंदन में है क्या वो नोटराइज करवाया गया। आप तहकीकाती सहाफ़ी हैं और अदलिया जो है वो आपका एहतराम करती है। आपने क्या पता किया कि इवेंट फील्ड का फैसला कब आया। और इस हवाले से उन्होंने जो तमाम यहाँ पे इवेंट फील्ड का जो फैसला जब आया तो उसमें 6 जुलाई का उनको हवाला दिया कि 6 जुलाई को फैसला आया था और 16 जुलाई को अपीलें दायर की गई। और उन्होंने ये भी बताया कि मैं और जस्टिस आमिर फारूक उस वक्त बैरून मुल्क छुट्टियों पर थे
اور اس وقت عدالت نے جسٹس محسن اخترچانی اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے اس کی ابتدائی سماعت کی تھی، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ پٹیشنر کی اپیلوں پر ملک کے مائع ناز وکلاء جس میں خواجہ حارث تھے، عائشہ حامد، امجد پرویز ایڈوکیٹ، منور دگل اور بہت سے دوسرے وکلاء کے انہوں نے نام لے کر بتایا کہ یہ سب جو ہے یہاں موجود تھے، اور انہوں نے عدالت میں 17 جولائی کو پیش ہوئے، اور اگر ایسی کوئی بات ہوتی ہے الیکشن سے روکنے کی تو کیا وہ اگلی ہیئرنگ کی انہوں نے اس حوالے سے کوئی درخواست دی. تو یہ وہ تمام سوالات تھے جو انہوں نے چیف جسٹس نے اس انصار عباسی سے کیے، اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ لوگوں کا اس کورٹ پر اعتماد تباہ کرنے کے لیے حقائق کو نظر انداز کر کے یہ جو ہے عدلیہ کو اسکینڈلائز کیا گیا ہے. اور میرے سامنے اگر کوئی چیف جسٹس بھی ایسی کوئی اگر بات کرے گا تو میں تحریری طور پر سپریم جوڈیشل کونسل کو اس حوالے سے آگاہ کروں گا، اور اگر چیف جسٹس کے سامنے کوئی جرم کرے اور وہ 3 سال تک خاموش رہے تو یہ کیسے ممکن ہے، جس پر چیف جسٹس صحیح بہت شکریہ. ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے عمران منصب، اور آپ کو ایک بار پھر سے بتاتے چلیں کہ چیف جسٹس نے اس حوالے سے جو ہے وہ سماعت کی تھی. آگے بڑھیں گے، کچھ دیگر خبریں بھی شامل کریں گے. آپ کو بتائیں کہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ وزیراعظم عمران خان کا خطے اور پاک بھارت تعلقات کے لیے ویژن پرامن بقائے باہمی، بین المذاہب ہم آہنگی اور تنازعات کے پرامن حل پر مشتمل ہے. نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی اسلام آباد میں زیر تربیت افسران سے خطاب کرتے ہوئے وزیر خارجہ نے کہا کہ ہمارے لیے چیلنج یہ ہے کہ ہم اپنے قومی مفادات کو فروغ دینے اور ان کو پہنچنے والے نقصانات کو روکنے کے لیے نئے حقائق سے ہم آہنگ ہونے کے لیے ہم اب چوکس رہیں. انہوں نے کہا کہ ہم گوادر کو علاقائی تعاون اور مشترکہ اقتصادی فوائد کے بے پناہ امکانات کے مرکز کے طور پر دیکھتے ہیں. وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان کا ہمیشہ سے یہ موقف رہا ہے کہ افغانستان کی جنگ کا کوئی فوجی حل نہیں ہے اور ایک پرامن اور خوشحال افغانستان پاکستان کے اپنے مفاد میں ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان کا مسلسل موقف رہا ہے کہ جنوبی ایشیا میں پائیدار امن جموں و کشمیر کے تنازع کے منصفانہ حل پر منحصر ہے. پاکستان کے ساتھ بامانی اور نتیجہ خیز تعلقات کے لیے سازگار ماحول پیدا کرنے کی ذمہ داری بھارت پر بھی عائد ہوتی ہے. اور ناظرین، اب آپ کا تعارف کروائیں گے کینسر سٹیج 4 تشخیص شدہ انگلینڈ کے سائیکل سوار لیو گرانفل شاہ. مہلک بیماری سے متعلق آگاہی اور زندگی کا بھرپور مزہ لینے کے لیے دنیا کی سیر پر نکلے ہوئے ہیں. ان سے آپ کی ملاقات کروائیں گے. آپ کو بتاتے چلیں کہ لیوک کے لیے زندگی کا ہر روز ایک چیلنج کی حیثیت رکھتا ہے. بالکل جی، اور لیوک شاہ کینسر کے دوسرے مریضوں کے ساتھ دنیا کی سیر کے دوران انگلینڈ کے شہر برسٹل سے بیجنگ تک 30,000 کلومیٹر کا سفر طے کر رہی ہیں. ان کے اس یادگار سفر کا مقصد کینسر سے متعلقہ 5 خیراتی اداروں کے لیے 3 لاکھ پاؤنڈز اکٹھے کرنا ہے. اپنے سفر کے ایک حصے میں لیوک شاہ اس وقت اسلام آباد ہمارے ساتھ پی ٹی وی نیوز روم میں موجود ہیں. ان سے کچھ بات کریں گے. لیوک، السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا شو. اٹس ویری گریٹ ہیونگ یو ہیئر اینڈ تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر. Thank you so much. It's really wonderful to be here right now. Look, we are very excited to have you here, and your whole journey, it's very amazing, it's very inspiring. Let's ask you some questions. And first of all, the thing which came into my mind is that cycling is quite an intense physical activity, and starting this whole journey, leaving your comfort zone, how did you manage so far coming to the whole world, visiting the whole world, 30,000 kilometers, starting from Bristol, going to the Beijing, and I guess you have been in Pakistan for like 3 weeks. How did you manage all this? I mean, I think, exercise is something that keeps your body strong, it keeps your mind strong, and cycling across the world, partly I look after my body, I eat good food, but there's a big mental component to this as well, and I think it really helps that I believe in what I'm doing, and there have been so many people who have supported me on this journey, and particularly in Pakistan, people have been so kind and helpful. So it's been a combination of being strong in my body, keeping healthy, and then the people who supported me on this journey. Okay, Luke, tell us, where did you find this tenacity and spirit that one day you woke up and said, let's go and roam around the world on the bicycle, especially in this ailment? Yeah. So most people have a dream in their mind and they think, one day I'm going to go and I'm going to climb a mountain, I'm going to travel the world, I'm going to do something amazing. And I was also one of those people, but I thought I would do it in the future. When I was diagnosed with stage 4 cancer at the age of 24, that made me realize I had to do my dream right now. And that gave me the impetus to say, I can't wait. I might be dead in a few months. I need to start my journey. I need to start living my dreams. And so I started cycling around the world. Okay, let's share some highlights of your tour with our viewers.
Luke, can you please share your tour? Right, so I mean, some of the most amazing things that have happened. I've been dancing in Georgia in the mountains. I've been trying different drinks and beverages throughout Central Asia. People have helped me in so many different ways, and often the most difficult things are often the best. So when I was crossing the desert in Uzbekistan, it was truck drivers who saved me basically from dying of thirst, and they gave me water. And I tell you what, when they gave me that water, that was like the best moment on this tour. So it just tasted so amazing. And when you meet new people, such as in Gilgit-Baltistan, I met some incredibly friendly people giving me the 7-starred apple, the 5-starred apple. It was just amazing, such delicious fruit and beautiful scenery. Okay, Luke, as you were telling us that you had this cancer when you were 24, and this huge disease, this ailment, and on top of everything, you had it when you were only 24. So how did you cope with it, and how did you decide that, okay, normally a person would be shattered about this news, and he would think that his life is just over. So first of all, tell us how you're doing right now, how about your treatment, how is it going, and on what stage are you right now? Are you recovering or in remission, or how, because you look very good right now. Thank you very much. I do my best. I went through chemotherapy, I went through surgery, I went through radiotherapy. I absolutely had the works. It's just so horrible. And the day that I was diagnosed with cancer was the worst day of my life. It was really utterly awful. It felt hopeless. But I realized I had a choice, that if I don't have very much time left, and I thought I might have 6 months, maybe. If I don't have very much time left, then I have a choice. And I have a choice whether to do nothing and be angry and resentful at life, or I only have 6 months. This time becomes incredibly precious, and I do as much as possible with that time. And that's what I decided to do, that I was going to make as much as possible out of my life. I didn't know what would happen, but I knew that whatever life I did have, I was going to make the most of it. Well, you chose a very right way of spending your life, the rest of your life, of course. Luke, can you please tell us your experience in Pakistan, especially? My experience in Pakistan has been really wonderful. It is one of the most beautiful countries that I've been to. I cycled from the Kunjurab Pass all the way down to Islamabad so far, and I'm going to be heading on to Lahore. You have just amazing, beautiful mountains, turquoise rivers, and of course it's the Pakistani people who are just so wonderfully hospitable. I've had so many offers of chai. There are a few times when I've broken down on the bike, and people have just come up and they've helped repair. They've offered all sorts of help. And so it's that welcome that has really been very special. Look, we were talking off here. Do you understand a little bit of Urdu as well? Assalamu alaikum, kaise hai? Tika. I mean, it's pretty good. It's really great that you have learned the local, not even the slang, the proper words, yeah. the words of greeting to each other. It's really great. Look, I know that there is another reason of this tour too, and not just because you have a message or you have to do something because of your ailment, but there's another mission that you're carrying with yourself. Tell us about that mission. Yeah, absolutely. So this journey is all about showing what is possible with a cancer diagnosis and inspiring people around the world to see that they can do so much more than they think with cancer. And part of what we're trying to do is raise money for charities, and we're aiming to raise £300,000, so about $500,000. And one of the organizations that we're supporting here in Pakistan is the Shaukat Hanum Center, and I'm going to be visiting there in Lahore, and it is a fantastic organization, and we are trying to raise as much money as possible for Shaukat Hanum, the center, and all the charities that we're supporting. So that is a big motivation for this ride as well. Really great. And there's another thing. When you start this journey from Bristol to Beijing, and the end point is your Beijing, and starting from a whim or starting from a motivated point of view, it's really great. But throughout the journey, there must have been a lot of times when you feel like okay, it's really difficult. Like giving up, you know? Yes, yeah. Obviously, you get tired, you get disappointed, you get you don't want to do it anymore. What do you do at that moment of life?
I now see life very differently from a lot of people. I feel life is so precious and I feel so grateful just to be alive. So there are times when I've been going up a mountainside for hours and hours. I'm knackered, I'm so tired. There have been times when I've been hungry, when I've been wet, when I've been cold, when I've been going into headwinds and I make no progress. And it's really, really tough. But I just feel so lucky that I'm able to travel across the world, meet new people, have new experiences and share my story, and seeing the impact that this story has is for me like the best reward in the world, and that keeps me motivated. Well, look, we have talked about your mission. So is your mission a success so far? I absolutely would say my mission has been a huge success so far. I have raised, and the team behind this have raised over £100,000 already. We've crossed 17,000 kilometers all the way from England here to Pakistan. So we already made some huge progress, and I've managed to share the journey on this second seat here with 150 different people. And you know what? 11 of those people also have cancer. And so together we are showing what is possible with cancer, and the number of stories of people saying, wow, that's just changed my life. That tells me that this has been a big success. Okay, look, we can see your cycle, and it has a very bright pink color. Your shirt also has a pink color, and it shows us that you are trying to convey some positive message, some happy messages. And your cycle also shows that it has been in a very in a long of time of places. It has been traveling through a lot of time, and it's been in a quite different places as such. So tell us about these colors, the message you are portraying to the people, and the message you are trying to convey to the world. Yeah, I wanted to make a statement with this ride. I really wanted it to stand out. And so there wasn't going to be any black or grey. I was going to go for bright, bold colors that also made me happy and made everyone who sees the ride happy. And I've had so many people here in Pakistan come up and take photos with me, with the bike, and it just puts a smile on people's face. And I think this is a message of positivity and a message that you can create your own opportunities so you can live the most enriching, fulfilling life, no matter the situation you find yourself in, whether that's cancer, whether that's problems at home, whatever it is, there's always things you can do to help yourself. And that's what this is about. Yes. Look, you're aiming pretty advanced. What about those people who give up on life? I think I would say to the people who give up on life, there's always something that you can do to help yourself. Life is incredibly precious. We only get one chance, and you don't know what's coming around the corner. I thought I was going to die, but I decided that I would do everything that I could to try and give myself the best possible chance of living and enjoying life. And I think we've always got opportunities to create things that are enjoyable, whether that's family, whether that's food, whether that's adventures, or whether that's our friends. We've all got those around us. Okay. Thank you so much, Luke, for being here. Thank you very much. It was really great having him here. Yeah. And he's such a nice guy, and also he's just 27 years old. He's an inspiration for all of He's an inspiration for us, for everybody else. And I'm also thinking that what will be the next spot on his life, and what because he's going to complete this journey. और यकीनी तौर पर ये इस journey को complete कर लेंगे और 27 साल Wishing की you उम्र में good luck, Luke. Thank you so much. Thank you so much for being here. नाज़रीन, ल्यूक ग्रैंडफिल शॉ हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद थे और एक इंस्पायरिंग स्टोरी अपने साथ वो लेकर आए हुए थे। सिर्फ 27 साल की उम्र में बीजिंग से ब्रिस्टल का सफ़र उन्होंने स्टार्ट किया और कैंसर के मर्ज़ को अपने लिए कोई भी जो राह का जो एक जैसे आप कहते हैं कि रुकावट जो होती है, जो रोड़ा होता है, उसको साबित नहीं होने दिया और इस सफ़र का आगाज़ किया। हमारी नेक तमन्नाएं उनके साथ है और उम्मीद है कि वो इस सफ़र को यकीनी तौर पर मुकम्मल कर लेंगे। खबरनामे के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और कुछ दीगर खबरें भी इस बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे। आपको बताएंगे कौमी असम्बली का इजलास डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी की ज़ेर सदारत जारी है। इजलास की मज़ीद तफसील जानते हैं अपने नुमाइंदे राना शहजादुस्सलाम से। राना शहजादुस्सलाम, बताइएगा, कौमी असम्बली का इजलास डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी की सदारत में जारी है, क्या एजेंडा है आज का? जी हुमा, जैसा कि आपके इल्म में है कि इस वक्त जो पाकिस्तान की सियासत है उसमें जो साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान है राना शमीम, उनका एक
بیان حلفی جو ہے وہ زیر بحث ہے، تو اسی بیان حلفی کی آج باز گشت قومی اسمبلی کے اجلاس میں بھی جاری ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مواصلات کے وفاقی وزیر مراد سعید نے اسی بیان حلفی پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ سابق جج رانا شمیم جو گلگت بلتستان میں، ان کو 2015 میں نواز حکومت نے جی بی کا چیف جج لگایا تھا، اور یہ جو ان کے بیان حلفی کی ٹائمنگ ہے یہ بڑی اہم ہے۔ انہوں نے کہا کہ 17 نومبر کو مریم نواز شریف کا ہائی کورٹ میں ایک مقدمہ جو ہے اس کی ہیئرنگ ہونی ہے، تو اس ہیئرنگ سے پہلے یہ جو رانا شمیم سابق جج جو ہیں جی بی کے، ان کی جو یہ کہانی سامنے لائی گئی ہے اور اس مقدمے کو جو ہے متاثر کرنے کی ایک بھونڈی کوشش ہے۔ انہوں نے ماضی کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ مسلم لیگ نون کی قیادت نے ہمیشہ عدلیہ پر حملے کیے ہیں، خاص طور پر سپریم کورٹ پر حملے کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ جو آج جمہوریت کا ہمیں درس دے رہے ہیں، کیا انہوں نے اپنے وقت میں سپریم کورٹ جیسی سب سے بڑی عدالت پر حملہ نہیں کیا؟ کیا یہ حملہ جمہوریت کی خدمت کرنے کے لیے کیا تھا؟ اس کے علاوہ انہوں نے جنرل جیلانی اور جنرل ضیاء الحق کی حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ نواز شریف کی تو سیاسی تربیت ان کی کوکھ سے ہوئی ہے، تو یہ ہمیں جمہوریت کا سبق دیتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، بہت شکریہ رانا شہزاد السلام، ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ حکومت نے عوام کو ریلیف دینے کے لیے آئندہ 15 دن کے لیے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزارت خزانہ کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق آئندہ 15 روز کے لیے پیٹرول 145.82، ہائی سپیڈ ڈیزل 142.62، ڈائی ڈیزل 114.07 اور مٹی کا تیل 116.53 پیسے برقرار رہے گا۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار نے کہا ہے کہ حکومت ڈیرہ غازی خان کے علاقے میں پینے کے پانی کی فراہمی اور زراعت کی ترقی کے لیے سواڑ ڈیم تعمیر کرے گی۔ لاہور میں سوڑا ڈیم کے حوالے سے ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے بتایا کہ اس منصوبے کا سنگ بنیاد اگلے برس کے آغاز میں رکھا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ سوڑا ڈیم علاقے کے لیے ایک گیم چینجر منصوبہ ہوگا، جس میں کوہ سلیمان کے پہاڑی سلسلے کے پانی سے پروجیکٹ کو مکمل کیا جائے گا۔ معاون خصوصی وزیر اعلیٰ پنجاب حسان خابر کا کہنا ہے کہ 2016 میں نون لیگ کی حکومت کے 3 سال کے مقابلے میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے پہلے 3 سال 2021 میں تحفظ خوراک کے حوالے سے پاکستان کی رینکنگ میں 3 درجے بہتری ہوئی ہے۔ اپنے ایک ٹویٹ میں عالمی تحفظ خوراک کے بارے میں درجہ بندی کرنے والے ادارے کا حوالہ دیتے ہوئے حسان خاور نے کہا کہ دنیا بھر کے جریدے، ماہرین اور لیڈران پاکستان کی ترقی اور عوام دوست پالیسیوں کی تائید کر رہے ہیں۔ اپوزیشن تعصب کی اینک اتارے تو پتہ چلے، آج پی ٹی آئی کی بدولت پاکستان عالمی توجہ کا مرکز ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں قاسم علی۔ ناظرین آپ کو آگاہ کریں کہ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک اور سرد رہے گا، تاہم شمال مشرقی اور جنوبی پنجاب میں بعض مقامات پر صبح کے اوقات میں دھند پڑنے کا امکان بھی ظاہر کیا گیا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران بھی ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک اور سرد رہا۔ آج ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت کی تفصیل کچھ یوں ہے: لیم -9، سکردو -7، کالام گلگت کالات -3، استور گوپس اننت ناگ -2 اور سری نگر میں -1 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔